Good evening, all. Good evening, sir. Good evening, sir. Wait for few minutes. सबको आ जाने दो फिर स्टार्ट करते हैं.
Hello, sir. Yes. Uh, Now we can start. इसकी वो चेंज हो गई है ना? हम्म, yes. So firstly, we have to start our server. So we are inside the backend folder. So we have to switch inside our main folder. So cd. Okay, I'm going to start the terminal from the command prompt. The yeah, stop.
Guys, the screen is visible. Yes, sir. Okay. So let's start our backend server. So we have to go inside our main folder, which is basically our e-commerce. So yes, ls cd e-commerce monster. Yes. So npm run server, and now we have to open our code editor. So yes, so our backend server is up. Now we have to start our frontend server. So npm frontend, and yes, you are inside your frontend folder. And now you have to start for what? Frontend server. So npm start. So yes, your application has been started, and now what you have to do, you have to provide their credentials. So Adarsh @ekida.com, and password is 123456. Yes. So yes, we have the admin dashboard where we have all the users detail, we have category details, we have the product detail, but we are working inside of guest dashboard. So yes, yeah. So we have some cards, and basically we are working on uh, the description page of the application. So yes, so what I'm going to follow this layout. So we have to like we have some images, we have then their heading, we have the price description, reviews, and add to cart functionality. So yes, we are going to make a design accordingly. So I'm inside my code editor, and now we have the pages folder where we have a guest dashboard. So inside the guest dashboard, we have basically the product card with the required details. And apart from the product card details, we have some filters which we have to make dynamic. So inside your product detail, we have a media card in which you have rendered your images, your name, your description, your price, and one icon which redirects you on the description page. Yes. So yes, you have a product detail space, and inside this product detail, we have to work today. So now we have some broken UI, so we have to work on it. So what I can do, I can simply uh, use this container and give some margin and padding. So it takes margin and padding from all the sides of the application. So if margin should be 2 and padding should be 3, then I think it is good aligned. Let me check. And now if I'm opening it, yes, you have some margin and padding. But here we have some images, and I'm going to make this image a little bit larger than the that size of the image, because we have to give the half width of the screen. So what you can do, you can go inside the style box or style image. So this is your style image, and you have width 100% and height 400 pixel. So why it takes smaller size?
Okay, we have a div, and this div have, okay, so this div have this div box, and this box have something something like width 50%. So we have to increase this width. And if I increase this width, then yes, we have the what the actual size of the image has been rendered. So I'm going to give width 80%. So it is looking good. So width 80%. And instead of using width 50%, I am going to give width 80%. So yes, it is now good. Yeah. So you are inside your product details phase and you have typography, two typographies, you have the rupees, and you have something called add to cart functionality. So what you can do here, so I'm going to make another page, which is, yes. So I'm going to make one another page which is add to cart, and I'm going to redirect the user whenever they clicks on the button. So what I can do, I have this cheap border, so I have to remove this border. So basically, it is inside. Yeah, this is not looking good. Yes, and now I'm going to give one button here uh, after this box button, and this button should be what? Add to cart, and you have to import this button from where? Material UI code. So yes, you have imported it, and yes, you have add to cart button. But you have to give some variant. So I'm going to giving it variant contained. So yes, you have the contained variant button, and yes. So what you can do here, giving some margin empty should be 2, and mm, okay. So okay, so make the firstly I'm going to give some functionality, and when today I also have to do one more thing, which is just deleting all the things from the database MongoDB, and then we will restore some of the data or some of the images, dummy images in your database, which gives the correct dimension, or which gives the current uh, what current images. Okay, so you have add to cart, and now you have to give some functionality to it, and you have to implement some functionality. So yes, you have add to cart button. So we are going to continue with your functionality part first, then we are moving to the designing part. Okay, so what you can do, you have to make one another page, which is what you can do, give the name add to cart, add to cart.js, and here you have to import React from React, and then const add to cart, which is an arrow function. And yes, this add to cart have what? Return
which returns the corresponding JSX. And what the JSX? Any HTML tag. So yes, I'm returning H1, and here inside your H1, this is your cart page, and you have to export it so you can use this component inside your application or any directory. So export default and add to cart. Yeah. So you have some linting issues here, so you have to fix it. And yes, it is now fixed. And what you have to do for this, the second step is you have to import this add to cart page inside your main application so you can make the route corresponding route on it. So yes, import add to cart, add to cart from pages and add to cart. Nice. So yes. So okay. So before sending the user on add to cart page from the description page, what you have to do, you have to check is the user is logged in or not. If the user is logged in, then only you can move your user from description page to add to cart page. Otherwise, if it is not logged in, then you have to move the user to a login page. Is it make sense, guys? Yes, sir. Yeah. Yes, So sir. what I can do, for that thing, the add to cart page is basically a private route file. Yes, so you can handle it with two ways. First way is that just check the condition on the pages, like on the description page, is the user is what logged in. Then just push the user on the add to cart page. Otherwise, just push the user on login page. And the second approach is that you can pass this component to a private route component. So the private route take care all the things. So I'm going to make the private route a second approach. So what I can do, you have this route, and inside this route, you have to pass add to cart, right? So yes, and now you have to fix this linting issue. And what you can do, just go inside your product details page, and where this button is, you have to fire one event from here. So the event name is on click, and you have to make a function handle what handle push or handle navigate. So this is the handle navigate function, and now just make it arrow function. So this is an arrow function. So inside this arrow function, what you have to do, you have to navigate the user to what add to cart page, and add to cart page, because it is a private route page. So your private route component checks whether it is logged in or not. So I'm going to use what? Just importing use navigate. So yes, you have a use navigate, and just call this navigate inside a variable which is a navigate. So use navigate. And now just navigate the user to where. So before doing that, I'm going inside my app.js and just change the route of add to cart. So yes, add to cart, and then okay. So add to cart is basically
What is the add to cart is basically a page which is a dynamic route page. It is not a static page. It is a dynamic route page. So you have to pass the corresponding ID of that product. So on the basis of that product, it redirects you on the add to cart page. Okay, so yes, you have already made it dynamic. So you have to pass their product ID on that ID path. Okay, that's good. So yes, you have a product details page, and now you can navigate the user to what? Add to cart, and after add to cart, what you have to pass? You have to pass the product ID. सर स्क्रीन फ्रीज हुआ है. Okay, screen is not visible. नहीं सर विजिबल है. अभी आ गया Visible? सर, आ रहा है अभी आ रहा है. Okay. So add to cart, and after the add to cart, you have to pass their product ID. And yes, you have the product ID inside your product details space, because when you redirects your user from the list of products to a single product item, then you have the product ID of that item. So yes, what is the product ID? State dot item dot underscore ID. That is your what? प्रोडक्ट आईडी. यही है ना, जब स्टेट से आपने निकाला हुआ था यहाँ पे, स्टेट के अंदर पूरा प्रोडक्ट था, एंड देन यू हैव टू find their ID from that product. So state dot. Okay, so you have to make it dynamic. So I'm going to use the literal strings instead of using a normal string. So inside the literal string, I can make our variables dynamic. So this is the dollar, and then state dot item dot underscore ID. And yes, this is done. Yeah. So let me check. So I'm going to make our button. I'm going to make our button what? Giving some styling SX, and cursor should be what? Pointer. And yeah, it is done. So let me check. Oh, so you have one error here. Module not found. Module not found. Add to cart which falls outside of the project. And why it is so? Add to cart is outside the. Okay. Let me check our app.js. And why it happens? Okay. So you can either move it inside SRC or no, add to cart. Okay, here is the problem. You are using single dot, so that's why it gives you the error. Okay, yeah. So when you click on add to cart, yes, it redirects you on that particular ID and the corresponding page, which is a cart page. Is it make sense? Yes sir. यस सर. Yeah. So yes, you have the add to cart page, and now you have to handle your cart things inside the add to cart page. So basically, here there's one challenge, or there's one another concept. So for now, what we have done, I'm going to make one comment here. So what we have done here is we are using Redux thunk to handle our what our APIs, and it updates the corresponding reducers
on the basis of what you have dispatched. What you have dispatched. That's good. So basically, we are using to handle the global state inside the Redux thunk. So whenever the API is hitting, it gives you some data, and you are going to save this data inside your inside your reducers, and then you can use this data with the help of use selector hook to get the data on the component basis. But for now, add to cart functionality is something which is there, which is not coming from the backend server. Add to cart backend server से तो नहीं आएगा, आप API हिट नहीं करोगे इसके लिए. आपको अपने फ्रंट एंड के अंदर, अपने एप्लीकेशन, अपने क्लाइंट्स ब्राउजर के अंदर ही उस एड टू कार्ट को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो डेटा है वो उस स्पेसिफिक यूजर का डेटा है. अगर तुम if you are on any any e-commerce website, then if you are logged in, then you have the items which is saved inside your add to cart. बट जैसे तुम लॉग आउट कर दोगे, या जब तुम्हारे लोकल स्टोरेज से तुम्हारा डेटा चला जाएगा, और लॉग आउट होने के बाद everything is clear from the client browser. So you have to manage all the functionality inside your front end rather than back end. So you are not going to integrate any API to handle your add to cart, because आप add to cart आप उसके ऑर्डर्स को अपने डेटाबेस में रखना चाहोगे, बट वो अपने विश लिस्ट में और add to cart में क्या रख रहा है वो उसको आप डेटाबेस के अंदर रखना नहीं चाहोगे, बिकॉज ये आप अनएक्सेसिव डेटा आएगा जो तुम्हारे डेटाबेस को पॉपुलेट कर रहा होगा. तो ऐसे डेटा को हम कहाँ रखते हैं? प्राइवेट क्लाउड. Sorry, sir. yes, you are using Redux, but this is for something which handles your state, but this data should be saved inside your local storage or a session storage or a cookie. It is not going to save inside your database. So for that reason, you are not going to integrate any API for add to cart. Does it make sense? Yes, sir. So you are using local storage to save this data, and with the help of Redux, you can populate this data inside your components. So, सर, ये Yeah. जो हमने अभी एड टू कार्ड बनाया है, yes, वो हमने पब्लिक राउट में इसलिए रखा है क्योंकि हमें वो अपने डेटाबेस में नहीं लाना. नहीं, पब्लिक राउट में हमने रखा, हमने प्राइवेट राउट में ही रखा है. ओके, हाँ सर, प्राइवेट राउट में रखा है. इसी ये रीजन भी नहीं है. प्राइवेट राउट में रखने का रीजन ये है कि ये किसी स्पेसिफिक यूजर का एड टू कार्ट होगा. अगर मैं इसको पब्लिक रखूंगा तो सारे यूजर्स का सेम एड टू कार्ट, जो कुछ ऐड करेगा वो सबको दिख रहा होगा. ओके, है ना? तो प्राइवेट राउट मीन्स क्या हुआ कि स्पेसिफिक यूजर का डेटा है, वो पेजेस जो स्पेसिफिक यूजर के हैं, वैसे राउट्स को हम प्राइवेट राउट्स बोलते हैं. तो हियर वी हैव ऐड टू कार्ट व्हिच इज स्पेसिफिकली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूजर. तो सारे यूजर्स का अपना अलग कार्ट होगा, है ना? तो दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग इट प्राइवेट राउट. सर ये विश लिस्ट में भी काम करेगा यही प्राइवेट राउट? यस, इट इज समथिंग लाइक विश लिस्ट और प्राइवेट राउट में कुछ हाँ, विश लिस्ट में भी आप प्राइवेट राउट ही यूज करोगे. ओके, ठीक है. तो yes, so what I can do here, I'm going to make reducer actions or action creators, store management, each and everything for that add to cart. So inside a add to cart, what we have a different number of things, number of items which is inside your cart. So you are going to make a list. जैसे आप add to cart, जब आप कार्ट पे जाते हो, अपने कार्ट में जाते हो, तो जितने आइटम्स आपने ऐड करा हुआ है वो टेबल के फॉर्म में आपको दिख रहा होता है, राइट? तो जितने भी आइटम्स आपने ऐड करोगे, आपके वो add to cart वाले पेज में आपको दिख रहा होगा. मैं इसको add to cart से चेंज करके कार्ट दे देता हूँ और फिर आईडी, ये ज्यादा सेंस करेगा. ठीक है.
So from here, um, we have add to cart, and yes. So here we are going to make a list, a UL, and then different LIs. So what you can do, have to import list, list item, and typography. And apart from typography, you have to import, uh, yes, you can import a grid. Yes, from MUI slash material. Nice. And what you can do inside this fragment, you're not going to return any fragment. Instead of returning a fragment, you are going to return what? A grid, a single grid. And yes, you have to close this grid because this return have these single smaller brackets. So inside a grid, what you can use, grid item, and inside a grid item, you have what? You have a list. You have a list. And inside this list, you have a list. What? Item. Yes. And so, okay. So before doing that, I'm going to returning a div instead of list. So div, and the div is basically I'm going some class here, and this class name have something which is a row, right? And single row, you have multiple columns. Class name, column, and yes, inside a column we have what? We have multiple items. So you can use anything, like you can use a div or a material UI component, whatever you want to use. It totally depends on you. So inside a single column, we have some text or some header text. So what I have, I am going to name something like what? Div, or not going to return any div. I'm going to return typography. And inside this typography, first thing is product name. Similarly, you have second column, what? Product name, product description. So let me check inside here. So when I add to cart, yes. So I'm going to return a product image as well. Product image, product price, the class name,
And here, typography should be what? Product price. And yes, you can use a delete icon. So you have to import it from the MUI. So material UI icons. Is this visible? Yes, sir. So what delete icon? So yes, it not gives you any suggestion for deleting the delete icon. CD. Yes, you can use this icon. Let me refresh this page. And now you can यार search इससे अच्छा हम delete. लोग ऐड टू विश लिस्ट और डिलीट का एक बटन ही बना सकते हैं ना। नहीं, ऐड टू कार्ट से भी तो डिलीट करोगे हाँ ना तो वो आइटम को, मतलब अगर ऐड टू तुम्हारा मेन। एक बटन बनाता है, ऐड टू विश लिस्ट, और एक डिलीट का बटन, मतलब विश लिस्ट भी मैं ऐड कर, जिसको मतलब डिलीट नहीं करना विश लिस्ट में डालना है तो वहां से भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक विश लिस्ट का बटन लगा दो। विश लिस्ट में हार्ट ही होता है ना, यस सर, हार्ड होता है। तो ये भी कॉपी कर लिया, ये भी डाल दिया। ठीक है, सो यस, सो फर्स्ट, okay, so you can do one thing here. If you like, if you have to reduce your time, then you can use one table which we have already made and which is inside your components. And yes, where is our table? Banner, yes, product table. And yes, you can use this product table. And yeah, so I'm going to use this product table. And yes, you have to import all the things from the product table. So yeah, add to cart. And what I can do, I can use this columns. Yeah. So yes, I'm going to remove this table pagination. So we have like product, uh, we have no any product list. So for temporary, we are going to make one product list array, product list, product list. And inside this product list, it is a single object with ID 1. And what you have, name should be board headphone. Description should be Lorem 50. Yep. So price,
It should be, and yeah, an image. So photo should be something string. For now, it is string. You can replace with your original image whenever you have made the. So yes, that's nice. Okay, so yes, you have to remove this table pagination. You have to remove this. No, you have to use these two icons. So I'm going to make it. I'm going to comment it for now. So let me check their UI. So it is broken. Let me check what is the issue. Okay. Okay. So problem is add to cart. You have changed the route. So you have to change the route. Uh, just go back, click on add to cart, and yes. So on the product details page, when you navigate the user, you have to navigate it on the cart page instead of add to cart. So yes, so when you click it, undefined reading name, undefined reading name. So what is the problem? Uh, product list, you have name. Where's the problem? On line number 69. Okay, so problem is inside this line 69. So you have to remove it because you have no any category. Yes. So I'm going to make a little bit what? Little bit take only I have to take 50% of the user screen, because on the 50% of the user screen you are going to handle the shipping address and all the things, and then you are going to move your user to payment page where you have to implement the payment gateway to integrate our credit card or debit card details. So yeah, so you are going to use only 50% of your screen. uh, okay, so yes. So here, before paper, inside your paper, I'm going to use typography, and inside this typography, which is shopping cart. So you have to import it, import typography from there, MUI slash material. And yes, and just give variant, and variant should be what? H1. No, H1. Sorry, H3. Yes. Okay, guys, give me some time. Uh, I will be back. Thank you, Anna. Got started. आगे सिस्टम साफ कर रहा हूँ उसको लेके वो वीडियो उसमें और सब का मेरा फुट रेडी ऑन पे होता है नीट हो जाए
good. It is good. कि चीज तो मुझे समझ आ गई एक्सपेक्ट वाली दिन और कुछ चीजें हैं। ये हुआ था अभी मेरे साथ। एक मंथ उन्होंने क्या किया कि पेमेंट में उन्होंने डिले करा, तो इन्हें नहीं पता था कि और मैं चल प्रोजेक्ट कलेक्ट करता हूँ, तो भाई हमारा सीधा फंड है कि 1 से 2 तक में सैलरी मिलती है, तो 7-8 दिनों तक ही तो रहते हैं। तो यार प्रॉब्लम क्या है, तो उसने थोड़ा ना एटीट्यूड की बात की, तो मेरे को आया गुस्सा। मैं थोड़ा मेरे साथ खेलते हैं। ऐसे अपने साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं जुबान के चक्कर में। सर यू और आप ये नहीं हो ना, और लोग ये तो है, लेकिन मुझे और से मतलब है ही नहीं। पॉइंट इज दैट कि बिना विदाउट एनी नोटिस 9 तारीख हो गया है एंड यू आर नॉट रिलीजिंग अस सैलरी, तो कहिए कि What the fuck are you up to? तो उसके बाद मैंने मेरे को आया, तो मैं वहां लगा कि पहले पैसे आ जाने दो, इसमें कोई बुद्धि नहीं बात है, पैसे आए, मैंने मार दिया रिजाइन। और ये मेरा फ्रीलांसिंग है, तो इट इज नॉट लाइक समथिंग कि मुझे कोई मेरा पीएफ अकाउंटेंट और You just get paid according to your हाँ ये करते हैं, और सिंपल बस पीडीएफ अपना राइटिंग good. तो ठीक है। हमारे यहाँ पे पता है मोस्टली लोग ना they don't understand the value or the importance of having two things to work. होना चाहिए एक सेकेंडरी ऑप्शन for your main throwing सीखते हुए रहता है इंसान। अब जो काम कर रहा हूँ वही तो कर रहा हूँ, इससे क्या होता है कि वो चीजें भी आपकी क्लियर भी रहती है ना। और ज्ञान बांटना is most important when you are into something where you have to keep on learning. That is something you have to keep. जैसे जैसे चीजें हर 2-4-5 साल चेंज होते हैं, you have to update yourself. और ये तुम्हें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहना है, तो सीखना ही है। तो आप और नहीं करोगे तो फिर रिफॉर्म नहीं करोगे, तो फिर आपको रिप्लेस करने वाले बहुत मार्केट में आ जाएंगे। मुझे 5 से काम नहीं कर रहे हो मैं। 3 महीने से फील्ड प्रॉफिट हो गया है। नीड आई थिंक 2 months to get back in the loop in the zone where you know your brain knows. वो एकदम से नहीं हो पाएगा, मैं तो एकदम से बावलीस हो जाऊंगी। क्या कह रहे हो? तो वही होता है यार। तो मैंने इनको दिखा दी, उसके बाद मैंने मार दिया ये ग्रुप में, मैंने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। अब जितने जितने ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अब इनकी स्ट्रेंथ भी है 20-30 की, तो क्या समथिंग हमें 1 लाख रुपए फी दिया हुआ है। Okay. इनके How many months this particular course? 7 months। Okay, for 7 months they have paid 1 lakh. ठीक है 7 months. हाँ, और and they learn to code tech. तो 1 लाख अब इन्होंने पे करा हुआ है, तो इनका भाई आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो मेरे से 35 लाख रुपए 6 to 7 months। मतलब आप अगर देखो तो वही एक बैच में से निकाल रहे हो तो पूरा वही है। हाँ, तो आपके पास 35 से 35 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं, और इवन आप साल में 2 निकालो, आप एक बंदे से 70 लाख का रेवेन्यू निकाल रहे हो। हाँ। बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद अगर तुम्हें रिस्पेक्ट में, तो मेरे साथ है कि यार मैं एक मतलब सबसे सब चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा, बट मेरे रिस्पेक्ट में नहीं यार। अगर मैं सारी चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस चीज में ना मेरे से नहीं रहा था। मैंने अब बच्चे यार पता है कई बार ना आपके कई काम ऐसे ही बन जाते हैं when you are kind, empathetic and you have sense of positivity and you have a nice zuban, तो आप कई काम तो लोग ऐसे तो they also this is how in general mostly attitude रखना चाहिए। अब इनका हुआ, मैंने बेटी अब इनके पास मेल पूरी रात में कम से कम इनके पास 100 मेल आ रहे हैं, एक ही बच्चे 400 मेल कर रहे हैं, जितने भी ईमेल सपोर्ट तक वो मेल करने लगा इन्होंने, ठीक है। और इनकी ना बैड लग गई, तो एचआर जो मुझसे तेज वन लगती हुई थी, उसकी हालत खराब हो गई। मिड अब पोस्ट का मिड
ठीक है, बच्चे दूसरे वर्ड ऑफ कर ही नहीं पाएंगे, एग्जैक्टली। लो है। और और एक एक हर किसी का एक वो भी तो होता है ना, कवर कैसे कर रहे हो एग्जैक्टली content। द वे ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें, बहुत टफ चीजें आप बहुत नॉर्मली निकाल सकते हो, बट बहुत सारी छोटी चीजें लोगों से ना बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। पढ़ाना एक बहुत बड़ी कला है। लाइक आई लाइक मेरे को कई बार कहता है तुम फ्री हो ट्यूट कर दो। आई नो आई कैन आई डोंट हैव दैट पेशेंस। Look, I can give trainings and all. I have been, but those are like 1-2 hours and certain. ऐसा नहीं कि this need a lot of patience and consistency. मतलब टेम्पर बहुत तुमको अपना वो रखना पड़ता है भाई। फूल पर पता है ओवर वही हो जाता है ये चलो यार, दो चीजें। और है मेरे साथ है कि थोड़ा सा ना मैं पैशनेट हूँ इन चीजों को लेकर। इधर मैंने प्लान में तुम्हें बताया था ना कि मेरे को, मैं अभी मतलब 1-2 साल तक मुझे करना है, इसको लेके चलना है। और देन क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है, मैं आई एम टेकी, मुझे पता है कि चीजों को कैसे बिल्ड करते हैं, और मुझे एग्जीक्यूट करने में मुझे किसी की डिपेंडेंसी की नहीं है। आई विल टर्न दोनों साइड, डिपेंडेंसी नहीं है डेफिनेटली। एक जाएंगे अगर मैं किसी से करवा भी रहा हूँ रख के तो बोल जाएंगे तो और लॉट ऑफ ऑप्शन। अगर वो भी नहीं है तो मैं तो पूरा, मुझे पता है ना चीजें कैसे भी, कोई फीचर तो नहीं बना सकता है। तो दोनों साइड, इनके जो सॉफ्टवेयर है आज के टाइम में क्या है कि आने वाले 5 साल में इसमें इतना पैसा है, इतना पैसा है, क्योंकि एवरी वन पहले क्या था ना कि जो बीटेक थे इंजीनियर्स थे उन्हीं के अंदर टेक्नोलॉजी सीखना। अब क्या ना ये सारी चीजें स्विच हो गई है। इवन नॉर्मल ग्रेजुएशन और ये सब वो सब टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं सब आज के टाइम में, क्योंकि ओवरऑल स्किल्स मैटर कर और रहा है। लाइक तो ये भी तो हो गया है ना, because of the internet and everything, it's resourceable to get educated, you learn something। तो ज्यादा लोग लर्न कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ मार्केट रेशियो कितना भी सिंस कोविड टेकीज बढ़ गए हैं। पर है भी, काम भी है तो चल भी रहा है लोग, मतलब हायरिंग भी आज के टाइम पे लिंक्डइन पे जो मैं जिसमें प्रोफाइल पे उसे मतलब 40,000 जॉब है रिएक्ट की प्रोफाइल पे। लोग मतलब इवन अभी है नहीं, उतने टेक्नोलॉजिस्ट है नहीं जिनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे आप मतलब रिसेशन के अलावा भी तुम्हारे पास एकदम के पास 4 ऑफर्स हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस वो टाइम के बाद ही आता है। हमारे उसकी मतलब हाँ जैसा भी है, मतलब इट्स अ वेरी नेसेसिटी थिंग एंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट। और एक्सपीरियंस पे जो 4 साल को डायरेक्ट सीधा नहीं लेके आ सकता है ना। यू हैव टू बी, अगर आप 4 साल एक्सपीरियंस है, 5 साल एक्सपीरियंस हो तो वो फिर उन्हें चाहिए तो 5 साल एक्सपीरियंस के हिसाब से चाहिए। यू कैन नॉट लाइक आप टेक अ नहीं बिग कर स्टेप सकते हैं। हियर। इसके फीस नहीं लगा सकते इसमें। हमारी इंडस्ट्री में तो भैया 1-2 साल में नए नए बच्चे अपना वो करते ही सीसीओ समझ लेते हैं। नए बच्चे एटीट्यूड होते ऐसा आ हैं जाता है कुछ हमारा। अभी नहीं देखते हैं तो कोई ऑफिस में होते हैं जो नए आएंगे ना वो बहुत बड़ी है, कुछ खाएंगे बढ़िया वो लगेगी नवी के यार कुछ लोग नहीं भी करते हैं, कुछ लोग का लक बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बट ठीक है everybody has। बट कुछ उसमें लोग तो का किस्मत तो ऐसा होता है ना कि आप किसी को पानी भी पिला रहे हो तो भी, मतलब किसी का ऐसा होता है कि पानी पिलाए पे तुमको दूध पिलाएगा यश मिलता है, किसी का दूध पिलाएगा पानी पिलाएगा यश नहीं मिलता। तो मेरा दिमाग शांत हुआ है सुबह की दौड़ भाग के बाद। दिन भर दौड़ भाग, और मैं पता है जब दौड़ भाग होती हूँ मैं सफाइयाँ करती हूँ।
Yes, so we can start. Yeah, guys, मैं unmute था ना, I'm sorry. And It's okay, मेरे sir. कुछ friend थे तो yes. Okay, so we can start. तो ठीक है. So where we are? So we are inside your add to cart page where we have you have the table, and the table have the required one object, which is what? A boat headphone. So yes, now I'm going to change some designs here. So yes, instead of giving width 100%, I have to give some width, which is what? 80%. Yes, it is good. So here we can use another table cell, another table cell, and what I have, giving align should be what? Left. And here inside this item dot photo. Okay. So for now, what you have to do, you have to click whenever you click on any item, then this item should be shown inside the add to cart page. And so you have to make some constants or some reducers to handle all the functionality. So inside the constants, I'm going to make another constant file, uh, add to cart, constants dot js. So export const add to cart. Add to cart, and it should be underscore add to cart. Okay, so here I have to say one thing. So here you're not going to handle it with add to cart success, add to cart failure, add to cart uh, starting. You're not going to handle it with that, because the point is why it is so, because this functionality is going to handle inside what? Inside a same React front end. So you know that you have two type of functions. First is synchronous functions, and second is what? Batao? Asynchronous functions. So synchronous functions are something which is a plain normal JavaScript functions.
normal JavaScript functions. So inside a normal JavaScript function, it is 100% damn sure your function is going to return something. Is going to return something. Why it is so? Because it is not depending. It is not depending on any kind of network request. Any kind of network request. Function is going to return something because it is not depending on any kind of network request. It means what? जब किसी दूसरे नेटवर्क पे वो डिपेंड करता है तो ही आप एक्शंस डिफाइन करते हो कैसा? स्टार्टेड, सक्सेस और फेलियर. If it depends on different network, if it depends on the same network, same URL, same browser, then जैसे it, कि सर वो मतलब इसका बैकएंड में तो ऑलरेडी सब ये करके रखा हुआ है ना, ऑलरेडी एक्शंस डिफाइन करके हाँ, सिंक्रोनस फंक्शंस का, हाँ, कि मतलब इसका आउटपुट ये आने पे ये एरर होगा, हाँ. वैसे ही बोल रहे हो ना आप? नहीं, तो इसमें मैं दो चीजें बता रहा हूँ कि जब तुम किसी एपीआई पे हिट मारते हो ना, ऐसे एक्शंस जहां पे आप एपीआई को कॉल करते थे, तो एपीआई कॉलिंग इज व्हाट? रिक्वेस्ट ऑन डिफरेंट सर्वर. What it means? You are going to hit a request from localhost 3000 to what? बताओ. Localhost 8000. So here in API request, it means in asynchronous functions, you are going to request from 3000 to what? 8000. 3000 to what? 8000. So what it means? Like you are going to request from 3000 to 8000. It means what? It may gives you a success data. It have some chance to just respond failure condition, because why? हो सकता है कि तुम्हारा सर्वर लोकल होस्ट 8000 तुम्हारा बंद हो. अगर लोकल होस्ट 8000 बंद होगा तो ये क्या एरर दे सकता है ना, ये डेटा भी दे सकता है और ये स्टार्ट भी होगा. Yes, sir. ऐसी कंडीशंस में वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? You are going to use what? 3 exports: add to cart started, add to cart success, add to cart failure. अगर हम इसको एपीआई बैकएंड से हिट कर रहे होते हैं, बैकएंड के लिए हमें एक्शंस बनाना होता, देन वी हैव टू मेक 3 एक्शंस फॉर सेम थिंग, फॉर सेम हैंडलिंग: add to cart started, add to cart success, add to cart failure. Because why? Because उस टाइम ये क्या होता है? एसिंक्रोनस कॉल होता. अगर आप और जगह देखोगे प्रोडक्ट में तो हमने 3 बनाया है: started, success and failure. But now we are going to make only, here we are making only one, because this add to cart is all the data inside this add to cart is the data of your front end, not a back end. समझ में आया? यस सर, हम इसे फ्रंट एंड से हैंडल करेंगे, इसीलिए इसका वन ही फंक्शन बनाया है. एग्जैक्टली, इसलिए हमने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन तो रिटर्न कुछ ना कुछ करेगा ही. यस तो इसमें कुछ ना फेल होने की कोई चांस है ना ही स्टार्ट होना है, इसको सीधा डेटा लेके देना है. तो यू आर गोइंग टू यूज ऐड टू कार्ट, अ सिंगल एक्शन क्रिएटर फॉर दैट. Is it make sense? यस सर. Yeah. So now everything is good, and then you have to make what? Okay, so here I have to define one more thing. What is this? So ध्यान से समझना सब. So inside add to cart, you have number of items. Number of items को handle करना है. You have to handle what? Number of items, multiple items. Then what you have to make? Your data should be what? Array of object. Array of object. मतलब something like this.
Hmm. right? So Yes, sir. you have to handle all the array of object inside your React application. So you are going to handle this inside your reducers, or like something like uh, what what you can say. Yes, you have to handle inside your reducer or in your action creator. So let me start with what uh, close this component src. Okay, so actions, you have to make another action, add to cart for JS. So import React from React, import React from React, const add to cart. So I'm not using camel casing, I'm using uppercase, add to cart. Oh, this is an okay. So what is this? This is a normal JavaScript function. So you're not going to use async, or you have to like, or any another actions. These actions are asynchronous actions, right? All the actions are what? What? Asynchronous actions. So you have something called what? Await. So here you have await. Inside a C product, you have async await. So these are the asynchronous functions. So if it is asked in the interviews, like what type of this function is, what type of functions do you have? So you can call it on the basis of uh, like data request. There's two type of functions: synchronous function, asynchronous function. And inside the asynchronous functions, basically it handles your API requests. And the normal JavaScript function is responsible to populate a data from one component to another component on a same server. But asynchronous function are something which helps you to send a data from one server to another server. So that is the main difference between synchronous and asynchronous. Okay, so here you have something called add to cart, which is a uh, normal function. So you have all the things. So what you are going to do? You have is it necessary to handle with try and catch block? No, sir. Because you're not going to request on any network, so it is not necessary to handle with a try and catch block, Hmm. right? So Yes, sir. inside a okay, so try and catch block are basically used to handle with a network kind of request, but it is the normal function, so you are going to use with a single dispatch. So you can simply dispatch action dispatch an action, and action have what? Type and payload property. So import so what you have to import? You have to import a constant. So this add to cart from add to cart, and you can simply dispatch this add to cart with payload properties. And whatever the payload inside the action, so action dot payload. And what you have to do, you have to simply take dispatch and
dispatch hmm, not action. You are going to payload data. And what is this data? So data should be anything. So I'm going to simply pass one string here from this function. So expose cost add to cart. So it is not, you have to use default. That's nice. And simply what you can do, you can dispatch this action from your component. So this is your action, and now you have to make a corresponding reducer and a store. Okay, so I think what's the time? Yes. Okay. So we have a simple actions. So one thing I'm giving you something as an assignment. Okay, how many of you guys are on the same page? Like uh, same page पे हो, मतलब पैरेलली कोड कर रहे हो इतना जहां तक है हम. कुछ लोग तो मुझे लग रहे हैं लाइक कोमल है, हिमांशी है, सर हम भी हैं. शान है. हाँ, सो कुछ लोग हैं. तो what you can do here, I'm going to give you one challenge here. Yes sir. Not for 4 or 5 guys. I am going to give for everyone in this group. Like just you have to implement, और this is a task, और ये बहुत अच्छा टास्क है. थोड़ा दिमाग में जोड़ दोगे तो काम कर सकते हो सब. So करना क्या है यहाँ पे कि I'm going to give like hint about it कि कैसे कर सकते हैं. तो inside your you have the add to cart, you have to make one reducer, and this is one of the tasks जो कि is little bit complex. तक से बन जाएगा ना. Yes, little bit complex है, but yes, it is feasible. बहुत अच्छे से कर सकते हो. तो inside your reducer, what you have to manage कि whenever any user click on add to cart button on product details page, this data should be saved inside a array. This data should be saved inside a array. So what you can do, what you have to do, add to cart button लगाना है on product details page. This data should be saved inside a array. So अब क्या होगा कि इस array को तुम्हें on second step, this array is now going to saved inside a local storage. So next time, whenever user clicks on any other item on the product details page, or on the any other item of different product, then you have to save
this data in different object inside the same array. और चौथा कंडीशन ये है कि if the user saves the same product, if the user saves the same product again, then you have to like what, अभी तो ये JSX पे हैंडल करना है, तो इसको छोड़ सकते हो चौथा, क्योंकि मैं कंडीशन बता देता हूँ कि अगर यूजर्स, मैं जो JSX अचीव करना चाहता हूँ इन चारों पॉइंट से, क्या जो मतलब तुम्हें यूआई पे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि मान लो कि कोई यूजर एक आइटम पे क्लिक करता है और वो जाता है ऐड टू कार्ट पे, तो उसके लिए एक नई रो बनेगी। अगेन अगर सेम यूजर दूसरे प्रोडक्ट को करता है तो उसके लिए एक अलग रो बनेगी, बट फिर वो यूजर आके ना फर्स्ट वाले प्रोडक्ट को फिर ऐड टू कार्ट करता है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ना ही कि लिस्ट के अंदर वो मल्टीपल टाइम दिखेगा। ऐसे ही होता है ना गाइस, ऐसे ही होता है ना e-commerce पे। तो you are going to handle with, firstly you have to handle the data, then you are going to render this data। ये तो समझ में आ गई होगी ना। पहले हम अपना डेटा रेडी करते हैं, फिर उस डेटा को क्या करते हैं, उस डेटा को JSX के फॉर्म में UI पे दिखाते हैं। then this data should be what, rendered on screen with what, UI components। यही काम होता है ना। तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें डेटा रेडी करना होगा। तो डेटा रेडी करने के लिए मैंने 4 स्टेप्स, 3 ही स्टेप्स अभी दिया है। प्लीज एक्सेप्ट दिस चैलेंज, और इसमें अगर दिमाग लगा दोगे सब तो बहुत सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। फिर तुम्हें चैलेंजेस समझ में आने लगेंगे कि कैसे चैलेंजेस होते हैं। थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है यार, नॉर्मल ही है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, add to cart button on product details page, this data should be saved inside an array। तो जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा वो डेटा कहाँ से स्टोर होगा, एरे में। दिस एरे इज नाउ गोइंग टू सेव्ड इनसाइड अ लोकल स्टोरेज। जैसे तुम्हें एरे मिलेगा उस एरे को लोकल स्टोरेज में सेव करा देना। तो पहले टास्क में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, सेकंड में तो सिर्फ तुम्हें लोकल स्टोरेज में सेव कराना है। एंड थर्ड इज व्हाट, whenever user clicks on any other item of the different product, then you have to save this data in different object inside the same array। तो ये छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, इतना रख दो कि दूसरे टाइम अगर कोई डेटा कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो वो उस एरे के अंदर क्या हो जाए, वो ऑब्जेक्ट एंट्री कर जाए। तो यू कैन हैंडल इट विथ रिड्यूसर। तो आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ कि यहाँ से ऐड टू कार्ट से जब डिस्पैच होगा, ऐड टू कार्ट से तो डिस्पैच नहीं होगा, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज से जब डिस्पैच होगा कोई एक्शन जो तुमने अभी बनाया है, उस एक्शन के कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या मिलेगा, उसका डिटेल मिलेगा, उसका पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इनसाइड योर actions। So inside add to cart action you have the corresponding data or a payload। So this data should be going inside your reducer, and inside the reducer you have to make what, an array, and you have to save all the data inside your reducer। इतना काम करना है। तो लाइक अभी से लग जाओगे तो 5-7 घंटे में हो जाएगा, मतलब 2-4 घंटे सोचोगे तो हो जाएगा। तो यू कैन टेक इट अ चैलेंज, और इसके लिए तुम्हें यू हैव टू टेक अ लेटेस्ट पुल ले लेना और यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो आई पर्सनली होप कि इन नेक्स्ट लेक्चर एटलीस्ट 3 से 4 लोग दिखाएं इसको, क्योंकि इससे ना सीरियसली बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखो एट लास्ट यू हैव टू लाइक use your own mind, and inside the IT industry no one is going to, कुछ समझ में नहीं आ रहा। am I audible? हाँ सर अभी ठीक है, मतलब बहुत ब्रेक हो रही थी आपकी वॉइस।
Okay. So yes, so you guys can take this this challenge और इसको करो और now आज के लिए इतना ही रहने देते हैं and in next lecture I am going to take attendance and continue further. ठीक है guys, bye. सर हाँ जी बाय बताओ, सर। थोड़ा सा एक हेल्प ले लें आपसे। बताइए। सर जो हमारा बुक स्टोर वाला प्रोजेक्ट था ना, पहला वाला, यस वो कंप्लीट कर लिया हमने। उसको हमने फायरबेस पे डिप्लॉय भी कर दिया, वो डिप्लॉय वो भी किया। तो जितना फ्रंट एंड वाला पोर्शन था उसका, या फिर कह सकते हैं ऐड बुक वाला जो ऑप्शन था, वो तक की तो चल रहा है, बट जितना भी डेटा हमारे db.json में था सर, वो नहीं शो कर रहा है। तो यार एक बार उनसे बात करते, तुम लोग कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करते हो एंड तुम लोग के डाउट सॉल्व हो जाते हैं लाइक। सर मेरी तो कभी उनसे बात ही सर नहीं कभी हुआ। कभी नहीं होते हैं डाउट सॉल्व। सर कोऑर्डिनेटर कुछ नहीं बताते हैं, Sorry? आधे से ज्यादा चीजें वो बस हमसे इधर उधर करा के बस बोलते हो गया। नहीं यार हो रहा है। देखो, यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस और तुम्हें प्रैक्टिस में प्रॉब्लम्स आएंगे, बट लाइक उतना स्पेस जोन नहीं बना पाता हूँ मैं, तो कभी कभी मेरे पास टाइम होता है तो आई विल डेफिनेटली टेक। तो एक बार ना तुम लोग बातें करो उनसे कि सर इसको सॉल्व करने की प्लीज कोशिश करो, बिकॉज आई हैव स्टक, मैं स्टक हूँ पिछले 2 दिन से 3 दिन से, क्योंकि सर बहुत सर अच्छे कैसा है से पता है सिखाने के लिए सर, नहीं बैठे हैं, आपका सारे डाउट तरीके निकाल लिए, मतलब डिप्लॉय तो वो प्रॉपर हो रहा है, जितनी भी डायनेमिक वेबसाइट्स हैं वो डिप्लॉय तो कर ले रहे हैं हम, बट जो सर्वर वाला पोर्शन आ रहा है ना, उसमें से थोड़ा सा फंस रहा है, सर्वर चलता नहीं है डिप्लॉय होने के बाद। देखो यार, अब ये चीजें आगे जब हम इस ई-कॉमर्स को कंप्लीट करेंगे तो हम इसको इसके सर्वर पे इसके डेटाबेस को डिप्लॉय करेंगे। तो अभी मैं उस पर ज्यादा तुम्हें बता नहीं सकता। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा इशू क्या है, तुम्हारा इशू थोड़ा सा अलग है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम सर्वर पे कोई डायनामिक चीजों को डिप्लॉय करते हो तो स्टैटिक चीजें तो बिल्ड बन जाती है, वो उसकी स्टैटिक बिल्ड बनती है। whenever you hit the command npm run build, तो उसका एक स्टैटिक वर्जन क्रिएट हो जाता है, वो जाके तुम्हारे सर्वर पे चला जाता है। बट जो डायनामिक होती है चीजें, वो कहीं ना कहीं किसी डेटाबेस से आती हैं। तो फॉर दिस थिंग्स, उस चीज को ना तुम्हें सर्वर पे हैंडल करना होता है। फायरबेस तुम्हें स्पेस भी देता है, तो मे बी कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगा। कुछ वो पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो एंड फिर से फॉलो करने की कोशिश करो, क्योंकि हम जब इसको कंप्लीट करेंगे तो डिप्लॉयमेंट देखेंगे। सर जो मेंटर्स लोग रहते हैं ना, उनको अगर हम कुछ, अगर हमें कुछ है जैसे जो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उनसे पूछते हैं ना, तो वो हमें ना कोई और वे में, मतलब जो आपने पढ़ाया है ना उसमें हम लोग अगर पूछेंगे ना ये कंफ्यूजन है, तो वो कुछ और ही बताते हैं। अभी जैसे लास्ट टाइम मैंने टाइपोग्राफी पे जो अपना ये लगता है ना स्टाइल्स रहता है, मैंने वो पूछा था, तो उन्होंने मुझे जो अपना ये सीएसएस लगता है ना वो वे में बताया, मतलब जावास्क्रिप्ट पे लगाना नहीं बताया। डायरेक्ट सीएसएस से बोले सीएसएस से अच्छा रहता है, आप ये फॉलो करो, जावास्क्रिप्ट फॉलो मत करो। तो मतलब वो इतना बताते ही नहीं है सब। यार देखो, ऐसा तो सीएसएस इज लाइक, अगर कॉमन कोई चीजें हैं तो वो चलो ठीक है, बट डेटा फ्लो में कहीं फंस रहे हो सब, तो डेटा वाली चीजें ना क्लियर कर लो सब, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम इज समथिंग कि वहां स्टक हो जाओगे तो 2-3 दिन ऐसे निकल जाते हैं। तो सर वही चीज हो रहा है। ओके, तो एक बार ट्राई करना सब, उन लोग उनसे ट्राई करो, नहीं तो क्योंकि और प्रैक्टिस जस्ट लाइक प्रैक्टिस स्टार्ट करना है तो कर दो सब बहुत ही ज्यादा। और स्टक होते हो परेशान करो उनको, पूछो, बिकॉज ही इज ओनली फॉर दी डाउट सॉल्विंग, और उनको उसी चीज के लिए चीजें मतलब वो अलॉटेड है, तो इसमें कोई सर भी प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, जैसे आपको पता होता है ना कि हाँ प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं, आप जैसे आप एक से 2 मिनट में प्रॉब्लम बता देते हैं कि हाँ यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम कहाँ से आ पा रहे हैं। वो बोलते हैं कि पूरा वीडियो देखो, मतलब पूरा कोड देखो। सर बिल्कुल सही बोलो, कुछ नहीं उनको कुछ यूआरएल में भी रॉन्ग रहेगा तो भी वो सॉल्व करके नहीं दे पाते, बोलते हैं हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे, आपको बता सकते, गाइड कर सकते, फिर वो हो नहीं पाता है सर। कितनी बार हुआ है, फिर वो जाने का ही नहीं तो मर्जी अगर करता है। कहीं बहुत ज्यादा लंबा स्टक हो रहे हो तो मैं इतना कर सकता हूँ कि अगर लंबा स्टक हो रहे हो, सब 3 दिन 4 दिन तक स्टक हो कहीं पे किसी जगह पे, तो उसके पहले खुद ट्राई करना सब, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि यू हैव टू ट्राई विथ योर सेल्फ जितना कर सकते हो। लेकिन अगर 3-4 दिन से ज्यादा कहीं, क्योंकि वीडियोस देखोगे डेफिनेटली जब कोड खुद से करने पे एरर्स आते हैं और टाइम बहुत जाता है, स्टक हो जाता है इंसान। तो अगर 2 दिन 3 दिन से ज्यादा स्टक हो रहे हो, एक जगह पे फंसे हुए हो, एरर सॉल्व नहीं हो रहा है,
So you can just reach to me, or agar if I have some space, then I will definitely try to help you guys. But try खुद से करना, क्योंकि जब तुम खुद से try करोगे तो you have to search a lot of thing on the Google. बस सर एक सर्च ये करोगे. से ट्राई कर रहे हैं, मतलब पूरा समझ लीजिए लास्ट वीक से ही हम ट्राई कर रहे हैं, कई बार हमने ट्राई ठीक किया है है। सर, तो you can just coordinate with me like for like tomorrow you can coordinate. ओके सर। तो वो ऐसा होता है ना, Sorry. Yes, Komal, sorry. Okay guys, so ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, कल फिर we will continue from here and we will handle all the functionality. ओके सर। और क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू यूज समथिंग लाइक वी आर गोइंग टू हैंडल पेमेंट गेटवे थिंग्स. So payment gateway things is a little bit complicated or little bit like challenging, because you are going to handle your debit card or credit card details with your application. So it is little bit complex. So for these things you have to like understand all the basic flow and all the basic things. Then you will go and switch on the like payment gateway things, because probably most of the people have a lot of difficulties inside the payment gateway integration. So we are going to make it simple and integrate it. Yeah. So okay guys, so bye, have a good night. गुड नाइट। Bye sir. Bye sir, good night. राइट सर। हिमांशी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? शान हाँ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, आप बताइएगा। हाँ 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 हाँ। यहीं पे है, आप स्क्रीन शेयर करिए। हाँ ठीक है। वो कर जाइए, ये करिए स्क्रीन विजुअल वही स्क्रीन। कोड दिखाइए। ये रहा app.js। सर ने बिल्कुल जैसा करवाया ना मैंने वैसे ही किया है, ये देखो। बट ना प्रॉब्लम क्या आ रही है बताती हूँ। यहाँ पर ये देखो, जैसे कि ये है प्रॉब्लम, ये आ रही है, मैं ये पे करने ना ये आ रहा है, लेकिन सर की में क्या आ रहा है ना कि यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ है, ये जो लोकल होस्ट मेरा ये पूरा दिखा रहा है, लेकिन यूआरएल नहीं आ रहा है, ये कुछ और ही आ रहा है। ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे रिजॉल्व होगी? कोड पे आइए एक बार। ये रहा। सब कुछ वही किया है, बट फिर नहीं हो रहा। ये जो आपका लाइन नंबर 17 है, हाँ इसमें ये डेप्थ कहाँ में और यूज किया है आपने? मतलब ये जो रिकॉल कर रहे हैं इसको और कहाँ पे बनाया है? और तो मैंने कहीं नहीं बनाया, इसको यही बनाया है। API यूजर्स यूजर राउट्स, थोड़ा सा और नीचे करिएगा कोड को।
जब सर्वर आप स्टार्ट कर रहे हैं तब वहां पे पोर्ट 8000 देते हैं ना। हाँ बट वो 8000 जब वहाँ दे रही है तो वर्क नहीं कर रहा है ना, प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे तभी तो तो आपने मेरी 8000 को डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो पोर्ट है वो आपने डायनेमिक ही दिया हुआ है। एक बार सर्वर को स्टार्ट करिए। हाँ सर्वर को स्टार्ट करिए। चलेगा? मैं